Hello everyone, my name is Shyam Manavat and I welcome all of you once again in the series of probability. We are in lecture number 2. Lecture number 1 हम लोगों ने देखा कि probability का फॉर्मूला कैसा होता है, कुछ independent events के बारे में समझा, complement events के बारे में समझा. In today's lecture we'll focus on conditional probability or you can say dependent probability, the event which is dependent on the previous event. Let's take some example. Let's see this. Let's see this. कुछ चेंज होने वाला नहीं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सेम ही है. इट्स जस्ट दैट we need to understand the difference in independent events, dependent events, and then how to deal with it. So question is, the example is, a box contains 6 red balls and 4 blue balls. 2 balls are drawn without replacement. What is the probability that the second ball is blue given that the first ball is red? Given that the first ball is red. You know what? For second ball to be blue, to be blue, फर्स्ट बॉल का कलर डिपेंड करेगा बिकॉज इफ फर्स्ट बॉल इज ब्लू सो सेकेंड बॉल के ब्लू होने के फेवरेबल आउटकम कम हो जाएंगे. थिंक अबाउट इट. इफ फर्स्ट बॉल इज ब्लू सो फर्स्ट बॉल के फेवरेबल है 4. आउट ऑफ 4 यू हैव टेकन आउट 1. So for second ball to be blue, the chances, the favorable outcome has reduced to 3. But if the first ball is red, if the first ball is red, okay, then chances of second ball to be blue will remain same as 4, right? So अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा ये? कैसे होगा बताओ? Second ball to be blue कैसे हो जाएगा? This will be, and we only have to talk about the second ball as per the question. So we will say the possibilities are, favorable outcomes are 4 because first ball is red, was red as per the question. Out of total कितना होगा? 6 plus 4? No. 5 plus 4 because पहला बॉल रेड निकल चुका है, first ball, and we are only talking about the second ball, so it should be 6 minus 1, 5, and this 4, so 5 plus 4 कितना हो जाएगा? 9. Got it? So this is what we mean by dependent probability, dependent events, or conditional probability, one of the same thing, that with condition of this, with condition of first being red. Let me show you more examples. और example दिखाता हूँ. ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही one of my favorite example for teaching dependent events or conditional probability. So the example is, there are 2 vessels containing red and green marbles. Vessel 1 has 5 red and 7 green. Vessel 2 has 4 red and 2 green. Okay. Question is, one of the marble is drawn from vessel 1 and placed into vessel 2. Okay. Then one marble is drawn from vessel 2. What is the probability that the marble drawn from vessel 2 is red? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? Let me draw this for you. Let's say this is your vessel number 1, okay, which has 5 red marbles and 7 green marbles. Okay, this is first vessel. Second vessel is like 4 red and 2 green. Okay. Question is, you pick up a marble from here and put it into the second vessel. And then you remove a marble from here, and this has to be red in color. Now, understand here. ये first marble, जो एक marble जो which we have picked up from the vessel number 1, there is no mention of color, so it could be anything. It could be red or it could be green as well. Is the question clear to you? You can go through the question, pause this video and you can go through the question again. अब यहाँ पे conditional या dependent event कैसा हो रहा है, समझो ध्यान से. अगर ये, if this marble which is picked up from the first vessel is red in color, then the number of red will increase here.
That means the favorable outcome for the final event will be increased. The favorable outcome for the final event will be increased. Whereas if the marble which we picked up from the first vessel is found to be green, in that case, the favorable outcome of the final event, which we want to be red, will remain same as 4, because you're adding green marble into the second vessel, right? तो green marble का नंबर बढ़ेगा ना, red marble तो उतना ही रहने वाला है 4, करेक्ट? तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द फर्स्ट मार्बल? डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंड कर रहा है, राइट? सो इट्स अ डिपेंडेंट इवेंट. I hope this example is making the concept of dependent event very clear to you, right? Okay. So चलो सॉल्व करते हैं. तो क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? फर्स्ट मार्बल का कलर नहीं दिया हुआ है. सो दिस कुड बी रेड एंड द सेकंड इज आल्सो रेड. और फर्स्ट इज ग्रीन बट सेकंड हैज टू बी रेड. ये फेवरेबल होना ही चाहिए. इसका कलर मेंशन है. फर्स्ट मार्बल का कलर मेंशन नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग बोथ पॉसिबिलिटीज हियर. क्लियर? अब क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिंपल है. First marble to be red, the favorables are 5 out of total 5 plus 7, 12. And second is also to be red. अभी red आपने add किया यहाँ पे तो 4 instead of 4 it just become 5 because you're adding red here. You getting it? So from the second marble, the favorable outcome, that means picking up red marble, is becoming 5. I hope you understood the reason, because we are considering the first marble picked up is color red. Okay. This is 5 out of 7. Plus, again, here, the first marble to be green, that is 7 out of 12. And because now you have picked up green and put it into the second vessel, the number of red marbles are same as 4. But the total number will still increase because ये यहाँ पे हो जाएगा +1. So 4 plus 3. Total marble will increase to 7. Okay. दिस इज वन एग्जाम्पल. और देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त ऐसा कुछ नया फॉर्मूला तो हमने अप्लाई नहीं किया. फॉर्मूला सेम, फेवरेबल बाय टोटल. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि डिपेंडेंट है, सो वी नीड टू कंसिडर बोथ पॉसिबिलिटीज. ओके. इट्स अ डिपेंडेंट इवेंट. इट्स अ डिपेंडेंट इवेंट, राइट? अभी सॉल्व तो आप खुद से कर सकते हो. सॉल्व क्या है? 12 इंटू 7 इज वॉट? 84. द न्यूमरेटर इज वॉट? 5 5 25. यहाँ पे आ गया कितना? 28. तो ये बन गया आपका 53 by 84. Okay. I hope the concept is clear. Concept clear है ना? Easy है. Dependent event और conditional probability. अब अगर आपको डबल कंडीशन दी जाए तो उस केस में हम लोग एक रूल लगाते हैं. देखो इस रूल, आई हैव टू मेंशन दिस रूल, अदरवाइज समटाइम्स स्टूडेंट्स फील कि मैंने पूरा टॉपिक कवर नहीं किया, तो इसलिए मैंने रूल का नाम मेंशन कर रहा हूँ. बट इससे डरने का नहीं. जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो यू विल नॉट फील लाइक वी आर अप्लाइंग एनी रूल एज सच. यू विल फील ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो देखना ध्यान से. सो ये बेयर्स रूल हम लोग लगाते हैं वेयर वी हैव कंडीशन, प्रोबेबिलिटी अंडर द प्रोबेबिलिटी, कंडीशन अंडर द कंडीशन. ओके. देखना मैं एग्जाम्पल से समझा. देखो फॉर्मूला तो बहुत ही ऐसा, देखो ए ऑन बी एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए एंड समथिंग समथिंग, ऐसा बहुत टोटल कुछ कुछ तो कुछ दिख रहा है यहाँ पे. इसको साइड में रखो अभी. आप रूल समझो, अपना रूल बनाओ. यू रूल इट, यू रूल दिस पर्टिकुलर चैप्टर. यू शुड रूल दिस पर्टिकुलर चैप्टर. यस. देखो ध्यान से, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत ही इजीली समझ में आएगा. बेस्ड है यहाँ पे हम. तो सिचुएशन कैसा है? क्वेश्चन में दिया है कि देयर आर टू मशीन्स इन अ फैक्ट्री. मशीन 1 प्रोड्यूसेस 60% of total items with 1% defective, and machine 2 produces 40% of the total item with 2% defective. Question is, find the item. You pick up a random item, one random item. So you're choosing one random item. So हम लोग कुछ NC1 का तो कुछ सेंस रहता नहीं. When you are choosing more than one, then we apply NC. वैसे हालांकि यहाँ पे कुछ उसका रोल है नहीं. Because number of items are not given, it's all in percentage form.
ओके, सो पे अटेंशन, सिंपल, आगे बढ़ो। अ रैंडमली चूजन आइटम, एक आइटम चूज किया इज डिफेक्टिव आइटम। ये नहीं, ये हमने पिक किया, ओके, दिस इज सपोज टू बी I mean, this is supposed to be one defective item and it has to be a probability that it come from the machine M1. ये हमें फाइंड करना, राइट? सो आप क्या बोलोगे कि सर एक बात बताओ यार, अगर मैं फेवरेबल यहाँ पे देखता हूँ, फेवरेबल देखता हूँ, तो दिस हैज टू बी द आइटम हैज टू बी डिफेक्टिव, हैज टू बी फ्रॉम M1, so ये M1 से होना चाहिए एंड इट हैज टू बी डिफेक्टिव आइटम, ये फेवरेबल है। अच्छा, टोटल क्या होगा? टोटल क्या होगा? यहाँ पे बेस रूल अप्लाई होता है टोटल के लिए, हालांकि ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, बट टोटल के लिए आपको ध्यान समझना पड़ेगा, बिकॉज देर आर कंडीशन आउट ऑफ कंडीशन दैट इट शुड बी डिफेक्टिव आइटम, टोटल डिफेक्टिव आइटम, टोटल, सॉरी, विल कंपेयर विद टोटल डिफेक्टिव आइटम, दैट आइटम वी हैव चूजन इज डिफेक्टिव, तो पहला वो डिफेक्टिव के ऊपर ध्यान फोकस कर रहा है। सो टोटल क्या होगा? We will not consider total number of items. We'll consider only defective item. And out of the defective item, the favorable is the defective has picked up from machine one. Is the question clear to you? So यहाँ पे टोटल जब पॉसिबिलिटीज बताएंगे तो टोटल आइटम्स के बारे में नहीं बोलेंगे, हम लोग सिर्फ डिफेक्टिव के बारे में बोलेंगे, बिकॉज ये हमारा फोकस है दैट आइटम हैज टू बी डिफेक्टिव, आइटम इज अ डिफेक्टिव आइटम विच वी हैव पिक्ड अप, राइट? So now what, how do you solve this? So you will solve this saying that ये आप डिफेक्टिव एंड M1 की जगह आप M1 एंड डिफेक्टिव बोलो, बिकॉज पहले वो मशीन M1 से होना चाहिए, तब आप बोलोगे डिफेक्टिव है। पहले डिफेक्टिव नहीं आ रहा ना, तो पहले M1 से पिक करने का आप क्या चांसेस है? 60%, so 60% ऑफ आइटम्स आर फ्रॉम M1 एंड बीइंग डिफेक्टिव इज व्हाट? 1%। क्लियर? डिवाइड बाय M1 से पिक करने का 60% and the item being defective is 1%, or it could be from M2 where the item to be defective is 2%, right? This is your probability. Yeah, ये आपका बेस रूल बोलता है। तो कुछ ऐसा डिफरेंस लग रहा है क्या? आपको कुछ डिफरेंट लगा इसमें? ये तो फेवरेबल बाय टोटल वाली बात है ना। फेवरेबल मतलब डिफेक्टिव फ्रॉम M1 डिवाइड बाय टोटल डिफेक्टिव। ये तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऐसा लग रहा है, राइट? या सो दैट्स व्हाई आई सेड, अभी इस फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला कितना डरावना सा लग रहा है, डरावना सा लग। सो फॉर्मूले पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ और सॉल्व करो। Okay, I wanted to mention this Bayes theorem because you will find this in um, sometime you will get some questions also based on this. So ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमने कवर नहीं किया है। ओके, कवर किया है हमने, बिल्कुल कवर किया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। सिंप्लीफाई करने चलो साथ में करते हैं। ये परसेंट, दो बार परसेंट है ना, ये वाला परसेंट, ये वाला परसेंट, ये परसेंट, ये परसेंट, कॉमन लेके बाहर निकालो। ओके, तो दो दो परसेंट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 6 into 1, 60 into 1, ये भी 60 into 1 और यहाँ पे 40 into 2, तो क्या हो गया? 60/140। सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज व्हाट, कैंसिल। सो 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 2 7, सो चांसेस आर व्हाट? 3/7। Okay, that item which you picked up is a defective item and it is from M1. Clear? Okay, एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल फिर से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉक्स 1 कंटेंट 3 white and 2 black balls. Box 2 contains 1 white and 3 black balls. A ball is picked up from one of the two boxes. Focus here. One of the two boxes. कौन सा बॉक्स से पिक किया ये हमें पता नहीं है. So we also have to consider the probability of picking up the box. ध्यान रखना. It turned out to be black. It turned out to be black. Black पे फोकस है हमारा. बॉक्स कौन सा पिक किया है? Sorry, it turned out to be black. Find the probability that the पहला फोकस हमारा ब्लैक पे है. Probability that it is drawn from box 1. तो हम क्या बोलेंगे? The favorable is black being from box 1 divided by total क्या होगा? Probability of being black
from box 1 or probability of being black from box 2. दिस इज व्हाट बेयर्स थ्योरम से, बेयर्स रूल से, कि भाई आपको जो जिस पे ध्यान देना है ना, उस पे जो ध्यान देना, फोकस करना है, वो ब्लैक पे फोकस करना है. सो यू डोंट इन डिनोमिनेटर जस्ट डोंट राइट टोटल नंबर ऑफ balls there. Focus on what do you want. You want to turn out to be black. That is your focus. उस पे आपको ध्यान देना. This is the only difference you see, but ऐसा कुछ बहुत मेजर डिफरेंस आपको नहीं फील होगा यहाँ पे. नहीं फील हो रहा ना? अभी इसको बेयस थ्योरम को बिना बताए भी हम लोग अगर सॉल्व करते तो ये ऐसे ही सॉल्व होना सही रहता. ऐसे ही आपका अंदर अंतरात्मा बोलती कि दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी सॉल्व लाइक दिस. We can't divide by total number of balls here, right? So black from ball 1. So what is the probability of being black from ball 1? It is 2 out of 5. 2 out of 5. Box 1 की probability क्या होगी? Half. Either it could be box 1 or box 2. Yeah, दो ही box है ना. So probability of picking up box 1 is half. Same black from box 1, sorry, or being black from box 2. Now you can take out half and cancel this out. What you have is 2 by 5 by this is half. You can cancel it because this is very simple. The possibility of being box 1 or box 2 is equal, half and half. That's why ये half का ज़्यादा कुछ इफेक्ट इस पे पड़ नहीं रहा है. So answer is what? 2 by 5. Simplify करो. This is 4 2s are 8. This is 5 3s are 15. And divide by what? 5 4s are 20. Okay. So now you can cancel this by 4. Okay. So 4 will go into the numerator. This will become what? 8. And this is 8 plus 15 will become what? 23. So answer is 8 by 23. Well, more than the calculation, did you understand this part? ये part आपको समझ में है? Focus हमारा है black पे. So black being box 1, black being box 1, black being box 2. That is what we need to focus on. अरे घबराओ मत घबराओ. और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल नहीं समझ में, फिर से एग्जाम्पल, नया एग्जाम्पल देखो. बहुत ही सुंदर सुशील एग्जाम्पल है. स्नेहा is known to speak truth only 75% of the cases. 25% of the time Sneha is speaking the false or lying, right? She selected a natural number from 1 to 10 at random and said that it is a prime number. अब वो सच बोल रही है या झूठ हमें नहीं पता ना, उसका ही चांसेस हमें फाइंड आउट करना है. प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज एक्चुअली अ प्राइम नंबर. मतलब उसने बोला प्राइम और निकला भी प्राइम. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर बीइंग प्राइम. Probability of number being prime. Okay. The focus किस पे? Number being prime. And then we need to see the possibility of when she is speaking the truth, when she is speaking the false. Okay. So अब इसका probability लिखोगे कैसे? पहले मैं लिख के बताता हूँ, बाद में numbers insert करते हैं हम लोग. Favorable outcome क्या है? She speaks the truth and it is a prime number. So prime and sorry, हम तो wording में लिख रहे हैं ना. Truth and it is a prime number. So दो possibilities है. Probability multiply by another probability of she speaking the truth multiply by probability of the number being prime. Divide by total possibility क्या है? Total possibility को ध्यान से देखो. Truth being prime. Okay. और अगर वो if she is lying, that means if she is speaking, if she is saying false, then false के केस में the number should be non-prime. She is speaking false and false बोल रही है और वो बोल रही है कि ये नॉन प्राइम है. उसने बोला कि नॉन प्राइम है और वो झूठ है. उसने बोला कि नॉन प्राइम है और वो झूठ है. फिर से सुनो, उसने बोला कि नॉन प्राइम है और उसने जो बोला वो झूठ है.
मतलब एक्चुअली इसका आउटकम क्या हो जाएगा? इट्स इक्वल टू अ प्राइम नंबर. सो दिस इज फेवरेबल एंड दिस इज टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग प्राइम. हो सकता है आप इसको लेके कंफ्यूज हो गए हो. अभी आप समझो फिर से. इफ शी स्पीक्स फॉल्स एंड से दैट इट इज अ नॉन प्राइम नंबर, और आपको पता चल गया कि वो झूठ बोल रही है, इसका मतलब आप क्या कंक्लूजन पे आओगे कि अरे इसका कंक्लूजन तो यही है कि इट्स इज अ प्राइम नंबर. डू यू एग्री? अगर आपको पता चल गया है कि वो झूठ बोल रही है और वो बोल रही है कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट मीन्स विल कम टू कंक्लूजन दैट तो इसका मतलब ये नंबर प्राइम है. आर यू गेटिंग दिस? इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग दिस? ये बात को समझो. सो इसका मतलब मैंने डिनोमिनेटर में क्या कंसिडर किया है? पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग प्राइम, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग प्राइम, ये भी उसी का ही पॉसिबिलिटी है कि नंबर बीइंग प्राइम. ओके, बिकॉज आवर फोकस इज नंबर पिक्ड अप इज अ प्राइम. एक्चुअली इट इज अ प्राइम. जैसे यहाँ पे था, द बॉल पिक्ड अप इज सपोज टू बी ब्लैक, तो हम ब्लैक पे फोकस कर रहे हैं. वो बॉक्स 1 से हो या बॉक्स 2 से, वो होना ब्लैक चाहिए. राइट? सेम है. फिर से सोचो उसको, फिर से रिवाइंड करके फिर से देखो कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ. पक्का आपको समझ में आया. I'm sure you will be able to understand this. So first, the number being, she's speaking the truth is 75%, and number being prime. So between 1 to 10, how many prime numbers are there? 2, 3, 5, and 7. So 4 prime numbers. That will be 4 by 10. Divide by. She is speaking the truth, which is 75% into being prime is 4 by 10. Or she speaks false and says that it is not a prime number, which is 6 by 10. So not number not being prime is 6 by 10, right? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कॉम्बिन इस बात को आप समझो, इस बात को समझो. वो झूठ बोल रही है और वो बोलती ये है कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. इसका मतलब ये होना चाहिए कि नंबर हैज टू बी प्राइम. ओके, ये आपको समझ में आ गया तो आप सीआईडी के जो कमिश्नर साहब है उतने इंटेलिजेंट बन जाओगे. आप बोलोगे कुछ तो गड़बड़ नहीं है इस क्वेश्चन में. राइट? ओके, लेट्स गो फर्दर. Now, simplification. I can take percentage sign common and cancel from numerator and denominator. I can take denominator 10 also common from both or from all of them and cancel this out. So I have 75 into 4, which is no, which is 300. And this is what 300 plus 25 into 6 is 150. So you get 300 by 450. Simplify kar lo. You cancel by okay. By 0 cancel के हम लोग इसको 15 से चलो 15 से डिवाइड कर लेते हैं. This will become 2 and this become 3. So answer is what? 2 by 3. So possibility of that number being prime is 2 by 3. Very high possibility, right? Okay, because she's speaking the truth, उसका possibility भी बहुत ज़्यादा है. That is the reason. 75% possibility. I hope you understood that question. Let's take one more example. Now here you have, in a class, 60% of the students are boys, 40% are girls. Okay. It is known that 70% of the boys play cricket. Okay. 25% of the girls will play cricket. If a student is chosen at random and found to play cricket is your focus. Okay, ध्यान रखना. और जब हम लोग उसको वर्डिंग में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो बात. What is the probability that the student being boy? तो आपका प्राइमरी फोकस क्या है? क्रिकेट. तो आप क्या बोलोगे? बॉय प्लेइंग क्रिकेट. या डिवाइड बाय दिस इज योर फेवरेबल. दैट्स व्हाट क्वेश्चन वांट. अच्छा, टोटल क्या होगा? अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट और अ गर्ल प्लेइंग क्रिकेट. देख रहे हो आप? सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी आपका क्रिकेट पे फोकस है. सेम लाइक इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस, आपको ब्लैक फाउंड टू बी ब्लैक, तो ब्लैक आपका फोकस है. ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वेदर इट इज
from box 1 or box 2. Similarly, found to be play cricket. So cricket is your focus. So cricket, 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 being this either from girl or a boy group, right? दिस इज बेस रूल। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मोर देन रूल समझने से ज्यादा ये समझो कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन बीइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, एंड डोंट वरी, वी विल डू सम मिसलेनियस क्वेश्चंस इन द प्रैक्टिस सेट। उस वक्त आपको ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी टू आइडेंटिफाई विच क्वेश्चन इज विच फॉर्मूला और विच कॉन्सेप्ट शुड बी अप्लाइड इन विच पर्टिकुलर क्वेश्चन। वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अभी इस पे ध्यान देते हैं। सो person being boy, there's 60% of the boys, so 60% and play cricket. So boys playing cricket, 70% boys play cricket. So out of boys, 70% play cricket. Divide by 60% का 70% और 40% girl, and chances of them playing cricket is 20%. Okay. Yeah. और example है. Yes, I know you have seen this. Next example पर और example है. That's what I'm saying. Don't worry. भाई आया है, सब समझा के जाएगा, डोंट वरी। नाउ सिंप्लीफाई कैसे करोगे? ये परसेंटेज सबसे उड़ा दो, सबसे निकाल दो, सब में कॉमन है, यहाँ भी 2 बार कॉमन है, यहाँ भी 2 बार कॉमन है, यहाँ भी 2 बार कॉमन है, निकाल के कैंसिल कर दो। अच्छा 0-0 में भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, इधर भी 2 बार 0, निकाल के उड़ा दो। सो व्हाट इज लेफ्ट विथ यू इज 6 into 7 and here is 6 into 7 plus, or if you don't like the way I'm solving, you can do it by your own way. I'm sure that also must be a correct way. करेक्ट है तो आंसर सेम आना चाहिए। 6 7 जा 42 बाय 42 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा? 42 बाय 50, राइट? सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेट्स कैंसिल बाय 2 2 ही होगा और क्या, सो 21 बाय 25, दैट्स योर आंसर। ओके, और एग्जांपल, हाँ, एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है, बट ये एग्जांपल वो स्नेहा वाले एग्जांपल जैसा ही है। सो आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो एंड देन अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ। ओके, ठीक है, चलो मैच करते हैं। हमारा आंसर मैच हो रहा है क्या? Akshay speaks the truth in 45% of the cases, and he says it. Okay. In rainy season, the chances of rains are 75%. On certain day, the rainy season, Akshay says that. अब देखो, अगर वो 45 of the time truth बोलता है तो 55% of the time he is lying. If the chances of rain is 75%, that means 25% of the chances that it may not rain. ओके, ये तो ऑब्वियस होना चाहिए बिकॉज टोटल परसेंटेज इज 100%। अक्षय टेल्स हिज मदर दैट इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब ये क्या होगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली रेनिंग। सो वो कब होगा? व्हेन ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ एंड इट इज रेनिंग। टोटल क्या होगा? ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ एंड इट इज रेनिंग, और ही इज स्पीकिंग false and saying that it's not raining. Right? Yeah, I hope this is clear to you. तो आप क्या बोलोगे? ट्रुथ बोलने के चांसेस हैं 45%, रेनिंग के चांसेस है 75%, सेम हियर। आई होप दिस इज क्लियर। फॉल्स बोलने के चांसेस है 25%, रेनिंग के चांसेस रिड्यूस हो गए हैं, बिकमिंग 55%। ओके, सिंप्लीफाई करोगे आप कैसे? परसेंट परसेंट यहाँ पे देखो, 2 टाइम्स 2 टाइम परसेंट 2 टाइम परसेंट, कॉमन, कैंसिल दैट आउट, और कॉमन निकालो। अच्छा, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सब में 5 है, निकालो, कैंसिल। सो बचेगा क्या?
9 यहाँ से 5 निकाला 15, यहाँ से हो गया 9 इंटू 15 एंड यहाँ हो गया 5 एंड 11। हम और 5 निकाल के कैंसिल कर सकते हैं। देखो इसमें 5, इसमें 5, यहाँ 5। सो क्या हो जाएगा? 9 3 जा 5 निकालो, 9 3 जा बचेगा, कॉमन निकाला दो। दिस इज ऑल्सो 9 3 जा 27 और यहाँ से 5 निकालो, सिर्फ 11 बचेगा। दिस इज व्हाट? 27 बाय 27 प्लस 11। दैट मीन्स यू विल गेट 27 बाय प्लस 11 कर दो, कितना हो जाएगा? 38। दैट्स योर आंसर। Did you understand how to use or how these cases has to be handled where there are possibility in possibilities, right? Easy, आसान है? आसान है, आसान है। Okay, so I hope you understood this concept. Conditional event or sorry, conditional probability, dependent event, बेस थ्योरम का एक सैंपल लिया। तो आप फॉर्मूला की जरूरत तो नहीं पड़ी, फॉर्मूला मत बाय हार्ट करना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, डोंट लुक एट दैट, जस्ट सी द कंडीशन वेयर इट इज अप्लाइड and how it is applied. So this is it in today's lecture. My name is Shyam Manavat signing off. I will see you in the next lecture. रुकना नहीं है अभी, और 2 लेक्चर बाकी हैं। कम से कम 2 और लेक्चर करेंगे हम प्रोबेबिलिटी पे, लेक्चर नंबर 3 and 4. Please stay tuned and understand the entire chapter. I will see you in the next class. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.